अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक खैरियत से फिट फाट हैं? तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह के हुक्म से सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं एक वीडियो लगाऊंगा काकाटू की, जो दुनिया के महंगे तरीन बर्ड्स हैं, बहुत महंगे तरीन बर्ड। एक पेयर हो तो बंदा एक लाइन क्रूज़र ख़रीद सकता है, इतने महंगे बर्ड्स हैं वो। तकरीबन कोई 70-80 लाख रुपए का पाकिस्तानी पेयर होगा। पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ही कम है, गिनती के 1-2-3 बंदों के पास होगा, वो भी 1 पीस। ठीक है, हो सकता है किसी के पास पेयर भी हो, ना मेरी इतनी सर्च हो कि मुझे नहीं पता। बहरहाल इतना मुझे पता है कि ज़्यादा नहीं तो 4-5 बंदों के पास वो पेयर होगा। तो बहरहाल पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं उसके साथ मेंशन कर लूँगा, उसके साथ मैं मेंशन नहीं कर सका क्योंकि वो ब्लॉग पहले ही बड़ा हो गया था मेरा, काफ़ी 14-15 मिनट का, तो इसलिए उसके साथ मैंने नहीं किया। मैंने कहा ये एक अलहदा ही ब्लॉग बनाकर तो अलहदा ही लगा दूँगा मैं। तो आपको ये दिखाऊँगा इंशाल्लाह ताला, महंगे तरीन जो बर्ड्स हुआ करेंगे उनकी आपको शेयर किया करूँगा वीडियो, कि जो पाकिस्तान में लाखों की तादाद में पाए जाते हैं। आम सस्ते नहीं, 40 लाख का पेयर भी है। ये जो प्लम काकाटू बताया मैंने आपको, ये तकरीबन कोई 80 लाख रुपए का पेयर है। ऐसे महंगे महंगे पेयरों की आपको वीडियो शेयर किया करूँगा आपके साथ। तो पिछले ब्लॉग में जो मैंने बताया है कि उसके साथ मैं टच कर दूँगा, मगर उसके साथ टच नहीं हुआ क्योंकि वो मेरा ब्लॉग पहले ही बड़ा हो गया था। तो ये एक अलहदा ही ब्लॉग बनाकर तो ये मैं लगाने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा आपको, बहुत उम्मीद है मुझे। बहुत अच्छी वॉइस है इस पैरट की, बहुत अच्छा साइज़ है, बहुत अच्छी फ्लाइंग है। ठीक है ना, आम जंगलों में पाया जाता है ये, आम पाकिस्तान में तो पाया ही नहीं जाता, ना साउथ अफ्रीका। ठीक है, पर मैंने ये कोई वेबसाइट थी उससे अपडेट की थी मैंने, तो वहाँ से अपडेट करके कुछ इसके मुख्तलिफ जो प्यारे प्यारे शॉट थे वो मैंने कवर करके एक वीडियो बनाकर तो ये पूरी वीडियो अपडेट की है मैंने। तो देखिएगा, पसंद कीजिएगा इसे, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और कोई जो नया मेरे चैनल पर आया है वो लाजमी सबसे पहले सब्सक्राइब करे और अच्छा सा कमेंट दे, अच्छे दोस्तों में शेयर करे वीडियो को पसंद आए तो। और कोई चीज़ ना पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है जी, तो ब्लॉग आगे देखिए जो मैंने लगाया इस प्लम काकाटू का, किस कंट्रीज़ में ये पाया जाता है, कितने अंडे ले करता है, किस तरह करता है, कहाँ पे घर बनाता है, और सारी इसमें लैंग्वेज है, इंग्लिश है, क्योंकि मुझे इंग्लिश तो ना बोलनी आती है और ना मुझे समझ आती है। ठीक है ना, तो अगर कोई हुआ समझने वाला तो इंशाल्लाह वो समझ लेगा खुद ही। तो देखिएगा, शॉर्ट करके मैंने लगाई है, बहुत प्यारी फिल्म है, तो लाजमी पसंद आएगी आपको। ठीक है, तो सुबह खैर, अल्लाह हाफिज़ जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग देखिएगा। In our language name we call it the kila. They really are a kind of ancient relic. To us, from a park's point of view, they're actually a tourist attraction. The first time you see a palm cockatoo, you never forget it. The Cape York palm cockatoo is the largest cockatoo in the world. Scientists consider these birds a separate subspecies from the ones that occur in Papua New Guinea. If one wants to understand not only the ecological but also the behavioural aspects of a species, one must be able to tell the individuals apart. Ornithologists usually capture the change. Back then, the idea was to try to palm cockatoo individuals in a non-invasive way. So I trialed this vocal individual. So this has been a really great discovery by this project, and it's just remarkable
to see and to be able to come to this branch and know that every night they're going to get fed here. The sheer diversity of species up here, not just the birds but the snakes as well and the reptiles, it's really interesting, and you go spotlighting at night. There's always so much to do. I never feel like I have enough time, and there's all these unique species that I want to go find that are only occurring in this region. It's a huge privilege to not only be able to study palm cockatoos, but also to come up and see With being a relatively understudied species, there's lots to discover, and over the past 7 years we certainly have discovered quite a lot about palm cockies. I found out they give at minimum 27 different syllables, and what was really cool is that I found that they were mixing and matching these syllables to make a more varied repertoire, vocal repertoire. And so it's kind of like songbirds, how songbirds, they mix and match different syllables and have phrases and things like that. So it's unusual for a parrot to be doing this. Having been around these gorgeous creatures, it is not surprising that local Our area, around Lockhart area. but they are far from being safe. About 3,000 adult birds are estimated to exist in Australia, and research from Lockhart River has shown that the population is in fact declining. It is unclear why they have such low breeding success, but breeding is not possible without large tree hollows that take hundreds of years to form. Palm cockatoos cannot build their own nest. They rely on nature and decades of time for their... I've seen it, more, but never actually seen them. only one. Chimpanzees or New Caledonian crows that also use tools from it, no tasty treats. And so it begs the question, well, why are they doing it? Why are they spending so much time, so much effort to make the tool and to drum with it? Hundreds of hours sometimes of... There's been one small paper based on a few observations and analysing our data of over 60 drumming events, and so we can just get a much better idea of what that drumming's about. In spite of the great efforts to uncover their secrets, the palm cockatoos still have a lot to offer. Will scientists have how they behave, to understand how they interact with their environment, because that's the only way that we're going to be able to effectively manage their population.